अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप सबके लिए एक जबरदस्त खुशखबरी है। CS403 की फाइनल प्रिपरेशन की न्यू वीडियो आ गई है। इस वीडियो में आपको मिलेंगे जी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs, रिपीटेड MCQs जो बार बार एग्जाम्स में आए हैं। तो देर किस बात की, इस वीडियो को फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको CS403 फाइनल टर्म की नेक्स्ट वीडियोस मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रिपरेशन। क्वेश्चन नो 1। Which of the following statements is true about the views? रोमन इंग्लिश व्यूज के मुतालिक इनमें से कौन सा जुमला ड्यूरस्ट है? ऑप्शंस: View is always a complete set of all the tables in a database. View cannot be used for retrieving data. The results of using a view are not permanently stored in the database. Rows cannot be updated or deleted in the view. Right answer: the results of using a view are not permanently stored in the database. Question no 2. What is the alternate name of data dictionary? रोमन इंग्लिश डेटा डिक्शनरी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शंस: इंडेक्स, मेटाडाटा, डेटा, सिस्टम कैटलॉग। राइट आंसर: मेटाडाटा। क्वेश्चन नो 3. इन फंक्शन हेल्प्स रिड्यूस द नीड टू यूज मल्टीपल एंड कंडीशंस। रोमन इंग्लिश इन फंक्शन का इस्तेमाल बहुत सारी एंड कंडीशंस को उसे करना कम करता है। ऑप्शंस: ट्रू, फॉल्स। राइट आंसर: ट्रू। क्वेश्चन नो 4. ब्राउजर बेस्ड फॉर्म्स आर डेवलप्ड इन द फॉलोइंग टूल्स एक्सेप्ट। रोमन इंग्लिश ब्राउजर बेस्ड फॉर्म्स इन टूल्स में डेवलप होती है सिवाय ऑप्शंस: HTML, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, फ्रंट पेज, वेब बेस्ड फॉर्म्स। राइट आंसर: वेब बेस्ड फॉर्म्स। क्वेश्चन नो 5. Which of the following are the general activities which are performed during the development of application programs? रोमन इंग्लिश एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाने के दौरान ये काम आमतौर पर किए जाते हैं। ऑप्शंस: डेटा इनपुट प्रोग्राम्स, एडिटिंग, डिस्प्ले। ऑल ऑफ गिवन। राइट आंसर: ऑल ऑफ गिवन। क्वेश्चन नो 6. Which of the following is not true about denormalization? रोमन इंग्लिश इनमें से कौन सा जुमला denormalization के बारे में ड्यूरस्ट नहीं है? ऑप्शंस: It is the process of attempting to optimize the performance of a database. Denormalization is a technique to move from lower to higher normal forms of database modeling. It enhances the performance of DB. In denormalization, it is required to add redundant data. Right answer: denormalization is a technique to move from lower to higher normal forms of database modeling. Question no 8. Which of the following types of partitioning reduces the chances of unbalanced partitions? रोमन इंग्लिश इनमें से कौन सा पार्टीशन टाइप अनबैलेंस्ड पार्टीशन का चांस कम करता है? ऑप्शंस: वर्टिकल, लिस्ट, हैश, रेंज। राइट आंसर: हैश। क्वेश्चन नो 9. While recovering data, which of the following files does a recovery manager examines at first? रोमन इंग्लिश डेटा रिकवर करते वक्त रिकवरी मैनेजर सबसे पहले कौन सा फाइल चेक करता है? ऑप्शंस: अ सिस्टम फाइल, लॉग फाइल, डेटा डिक्शनरी, मेटाडाटा। राइट आंसर: लॉग फाइल। क्वेश्चन नो 10. Which of the following is not a feature of indexed sequential files? रोमन इंग्लिश इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल फाइल्स का कौन सा फीचर नहीं है? ऑप्शंस:
Records are stored in sequence and index is maintained. Dense and non-dense types of indexes are maintained. Track overflows and file overflow areas cannot be ensured. Cylinder index increases the efficiency. Right answer: track overflows and file overflow areas cannot be ensured. Question No. 11. Which of the following is the correct description of cache hit? रोमन इंग्लिश कैश हिट का सही मतलब क्या है? Options: when data is found in the cache, when data is removed in the cache, the number of times the cache is accessed directly by the processor, when data is lost from the cache. Right answer: when data is found in the cache. Question No. 12. In which of the following situations clustering is suitable? रोमन इंग्लिश क्लस्टरिंग किस सूरत में बेहतर होती है? Options: frequently updating, relatively static, relatively deletion, relatively dynamic. Right answer: relatively static. Question No. 13. Which of the following is disadvantage of chaining technique to handle the collisions? रोमन इंग्लिश चेनिंग टेक्निक का नुकसान क्या है जब कोलिजन हैंडल किया जाता है? Options: unlimited number of elements, fast rehashing, overhead of multiple linked lists, maximum number of elements must be known. Right answer: overhead of multiple linked lists.